Hello children, welcome to my YouTube channel LIMPALORA. Today I am again back with your second chapter acid, bases and salts. आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी salts, different types of salt and their preparation. आप सब तो जानते ही होंगे कि नमक हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस रखता है, चाहे वो खाने में हो या हमारी ज़िंदगी में. Okay, this is just a joke. Now let's be back to our lesson. Now what are salts? Salts होता क्या है आखिर? Salts are nothing but compounds which are formed by the neutralization of acids and bases. This already I have told you in my previous video. Examples, you can see the examples. HCl plus NaOH give NaCl plus H2O, that is hydrochloric acid and sodium hydroxide. When react together, it forms sodium chloride and water. Similarly, sulfuric acid plus potassium hydroxide gives potassium sulfate plus water. So you can see during the time of neutralization reaction and formation of salt, always water is given out and a salt is formed. Now my next topic is types of salts. Now children, ये जो salts होते हैं basically 3 types के होते हैं on the basis of their formation, कि वो किस तरह के बने हैं, वो कौन से acid and base को मिलाकर बने हुए होते हैं. So my first type is strong acid and strong base. Strong salt made up of strong acid and strong base. Example, you can see NaCl, potassium sulfate and potassium nitrate. Now in this case what happen, क्या होता है जब दोनों strong acid और strong base होता है तो दोनों एक दूसरे को completely neutralize करते हैं, जिसकी वजह से इनका pH जो होता है वो 7 होता है. Their pH is 7. Example, sodium chloride, potassium sulfate, potassium nitrate. Sodium chloride, you can see from that it is made up of sodium hydroxide और HCl के combination से ये salt बना है. Similarly, potassium sulfate, potassium hydroxide and H2SO4 के combination से बना है. Next, KNO3. अगर मैं पूछूँ कि KNO3 कैसे बना है, so K for that means potassium hydroxide and nitrate means negative ion. So nitrate means HNO3. Okay, so HNO3, that means nitric acid. So nitric acid or potassium hydro together they form a salt, okay, which is made up of strong acid and strong base, okay, and its pH is 7, that is it is neutral. Okay, now we move to the next type of salt, that is salt of strong acid and weak base. Salt of strong acid and weak base, pH is less than 7. Why? Because mainly it is a strong acid. So strong acid dominancy is much more than the weak base. Okay. So always when the salt is formed, acidic property is there. Okay. So all this type of salts are acidic in nature and their pH is less than 7. Example, ammonium chloride. That means ammonium chloride किस चीज़ का बना होगा, कौन से एसिड और बेस का, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड. नेक्स्ट वन, कॉपर सल्फेट. सो कॉपर सल्फेट यू कैन सी कॉपर सल्फेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड H2SO4. तो H2SO4 क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स. नाउ that means in the table, from the table it is clear that 3 types of salt plus उसके pH कैसे होते हैं, less than 7, more than 7 or equal to 7, plus also the examples. Now we move to the third type. That is salt of weak acid and strong base. जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को कंबाइन करके बना हो एंड दैट pH इज ग्रेटर देन 7. वाई ग्रेटर देन 7? क्योंकि इस केस में जो सॉल्ट बना है उसमें स्ट्रॉन्ग बेस यूज हुआ है. दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग बेस विल डिसोशिएट मोर कंपेयर टू द वीक एसिड. सो द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्ट विल ऑलवेज बी बेसिक इन कैरेक्टर, बिकॉज इसमें बेसिक कैरेक्टर क्या है, डोमिनेंट है.
Okay, so pH is greater than 7. Example, sodium carbonate, sodium acetate. You can see in the examples, sodium carbonate, sodium acetate. Sodium carbonate, that means it is made of sodium hydroxide and कार्बोनिक एसिड. तो कार्बोनिक एसिड क्या होता है, एक वीक एसिड होता है, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है. सिमिलरली इन द नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज सोडियम एसिटेट इज मेड ऑफ एसिटिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो एसिटिक एसिड भी क्या है, एक वीक एसिड है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है एक स्ट्रॉन्ग बेस है. आई होप दिस 3 टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स आर क्लियर टू यू चिल्ड्रन, एंड दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक of your chapter 2, and you must learn this thoroughly. Now next, my subtopic is salts प्रिपरेशन एंड देयर यूज़. नेक्स्ट जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ वो है सॉल्ट, वो कैसे प्रिपेयर होते हैं और उसके यूजेस. इसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे है सोडियम हाइड्रोक्साइड. ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ ऑल्सो नोन एज कॉस्टिक सोडा, एंड यू नो मस्ट बी नोइंग द फॉर्मूला, तो मालूम होगा आपको, NaOH. नाउ बिफोर स्टार्टिंग आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, कि जो NaCl होता है, जो सोडियम क्लोराइड विच इज़ ऑल्सो नोन एज कॉमन सॉल्ट, विच इज़ सीन इन ऑल द हाउसेज, सबके घर में, इवन सबके घर में आपको सोडियम क्लोराइड मिलेगा, विच इज़ अ बेसिक इंग्रेडिएंट यूज इन cooking. So sodium chloride is basically a raw material for the formation of number of salts. बहुत सारे salts जो other salts हैं उनको prepare करने के लिए जो sodium chloride है एक basic ingredient है. Okay, so first we move to NaOH. Now NaOH का preparation कैसे होता है? Okay children, so how the NaOH is prepared, that method is known as chlor-alkali process. I am repeating again, कैसे prepare होता है, that is known as chlor-alkali process. Okay, so what is that chlor-alkali process? Here what is happen, the aqueous solution of NaCl को sodium chloride को brine भी बोलते हैं. Aqueous solution of sodium chloride also known as brine. तो brine is electrolyzed. That means electric current is passed through the aqueous solution of sodium chloride, which is also known as chlor-alkali process. And what happens during this? Sodium chloride, it gives sodium hydroxide plus chlorine gas plus hydrogen gas. You can see in the reaction, that is it gives sodium chloride plus H2O gives sodium hydroxide plus chlorine plus hydrogen. We find that chlorine gas is given at anode, hydrogen at cathode, and sodium hydroxide is also obtained at cathode. Is it clear? So कैसे प्रिपेयर हुआ, इस मेथड को हम बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस. इसमें होता क्या है, इट्स वेरी इजी. इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन, electrolysis of brine takes place. That means electric current is passed through aqueous solution of NaCl, and it get decomposed into sodium hydroxide, chlorine gas and hydrogen gas. Sodium hydroxide is collected at cathode, chlorine gas at anode, and hydrogen also at cathode. Okay, so this is the preparation. Now we move to the uses. अब uses क्या है इसके, ये तो हमें पता होना चाहिए कि अगर ये prepare हो रहा है तो इसका कहीं ना कहीं तो use होगा. So we move to our next slide, that is uses of caustic soda. You know what is caustic soda, that is same NaOH. Now NaOH is used for the manufacture of soap, detergent के बनाने के काम आता है, manufacture में काम आता है. Then it is used for the preparation of artificial fibers, for the manufacture of papers. Okay, fine. So children, this is all for today. I hope all the subtopics which I have taken today are clear to you. In the next topic, I'll take all other salts. दूसरे जो salts हैं like washing soda, sodium bicarbonate, plaster of Paris, all these which are very important, I'm going to take in my next video. I hope this is clear to you. Thank you very much. If you like the video, kindly share and subscribe.